Hi students, welcome back. Let's start and complete this lecture of inverse trigonometry. So in the previous lecture we had seen that what were the principal value, the range, domain, and how to solve basic kind of questions. Now in this lecture and the next lecture, which is coming up exactly after that, we would be ending up this chapter by using the questions by using the word trigonometric identities. Now let's see. First property says sin inverse x plus cos inverse x equals to 90 degrees. But अब ये कैसे आया आपके पास में? That sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. So I'll just solve one randomly. बाकी आप खुद से भी कर सकते हो. It's a very simple topic. So since there's lack of space, so let's start it right from over here. So let us say suppose मैंने माना that sin inverse x is equals to theta. Sin inverse x equals to theta. So let x is equals to sin inverse will go at that side, it will become sin theta. Or you can multiply the sin and sin inverse x all apart. So x will become equals to sin theta. Let it be like b over here. Now अभी x is equals to sin theta हो चुका है. क्या मैं इस x को ऐसे ही मैंने लिखा and sin की जगह पर लिख दिया cos 90 minus theta. अब बोलोगे ये कहाँ से आया था? क्लास 10th आइडेंटिटी. cos 90 minus theta should be equals to sin theta. तो मैंने sin theta की जगह पर cos 90 minus theta लिख दिया. Let's bring this cos back onto this side. So this will become cos inverse x should be equals to pi by 2 minus theta. Let's bring this theta back to this side. So theta plus cos inverse x should be equals to what? Pi by 2. But अभी तो आपने बोला theta equals to sin inverse x है. So putting this value back over here, so your identity becomes proved. Sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. So you can solve all of these identities, guys. Very simple, nothing much. But remember, guys, there's this way, because this way is going to help you out a lot in the exam. Sin inverse x equals to theta. X is equal to sin theta. X is equal to sin theta can be written as cos 90 minus theta. Cos inverse x should be equal to 90 minus theta. And then this theta once again comes back over here. And that's all. So that's how you can solve tan inverse x and cot inverse x also. So very simple, guys. Sin inverse x plus cos inverse x equals to 90. Tan inverse x plus cot inverse x is also equals to 90. Sec inverse x plus cosec inverse x is also equals to 90. So only these three identities you need to remember, guys. Rest everything, whatever is being written on the board, it's very simple. Let's see how. So if somebody says sin inverse x plus cos inverse x, it should be equals to 90. Sec inverse x plus cosec inverse x, 90. Tan inverse x plus cot inverse x, it's also equals to 90. Now let's see this. Sin के अंदर आपको मालूम है कि जब भी कभी sin के अंदर, यहाँ पर लिख देता हूँ, okay, suppose if I have written sin minus theta, you already know it should be equals to what? Minus sin theta, right? किसी ने आपको बोला cos minus theta, then it should be equals to cos theta, correct? In the same way, if somebody says sin inverse minus x, जब भी sin के पेट के अंदर कोई भी माइनस का साइन जाता है, it will become minus sin inverse x. Cos inverse minus x, it will become pi minus. क्यों? याद करो, cos में तो माइनस थीटा भी पॉजिटिव बन जाता है, तो माइनस कब आएगा? जब आप सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तब. So cos inverse minus x will become pi minus cos inverse x. Tan inverse minus x will become minus tan inverse x. Sec inverse minus x will become pi minus sec inverse x. So आपको शॉर्टकट ट्रिक, हर जगह पर आप साइन इनवर्स लो, सेक इनवर्स लो, कुछ भी लो, आप केवल कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स जो कॉस का उल्टा होता है उसके अंदर केवल पाई माइनस आएगा, बाकी सब में बस माइनस साइन डाल देना. मतलब कैसे? साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स. बट जहां cos इनवर्स माइनस एक्स आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. जहां sec इनवर्स x आएगा, पाई माइनस
sec inverse x. And the last exception is cot inverse. उसमें भी pi minus cot inverse x. That's all. Okay. Next पर आता है. अब बच्चों वाली प्रॉपर्टी गाइस, एंड ऑल ऑफ दिस पार्ट इज ओनली एप्लीकेबल यदि आपने चीजों को रेंज के अंदर रखा हुआ है. यदि आप 1 to -1 लेकर के जा रहे हो तभी ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है. ओके. sin inverse x, it should be equals to x, which is true if x lies in between -1 to 1. यदि आपने sin inverse यहाँ 2 लिख दिया, not applicable, you need to change that. sin inverse x is minus x, x, cos inverse x, x, tan inverse x, x. यदि अपने रेंज के अंदर होगा तो आप इसको बाहर लिखो या इसको अंदर लिखो, it does not make any difference at all. Everything will be equals to the normal part. Now let's move on to the most important formula. Guys, ये अकेला फॉर्मूला पूरा चैप्टर सॉल्व कर देता है, ये, और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती. आपको मालूम होगा नौ बच्चों वाला तरीका, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 11th. tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. Do you remember? If you don't remember, no problem. Now you can remember. Okay. Tan a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. If somebody says tan inverse x plus tan inverse y, same formula. Tan inverse एक ही डिग्री के अंदर x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse x plus y upon 1 minus xy. If the same formula is over there, but the conditions I'm rubbing this off. If the same formula is going to be over there, then ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि लेस देन 1 आ रहा होगा तो. ओके. इफ x इंटू वाई, जो भी कोई डिग्री है x और y का, यदि वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देन यू हैव टू राइट पाई प्लस tan इनवर्स. बस केवल पाई प्लस और पाई माइनस डाल देना, उतना ही काम कर रहे हैं. If xy is greater than 1, then also the same condition, but third condition unique क्यों है? If x less than 0 and y less than 0. यदि x into y करोगे और यदि greater than 1 आ रहा है तो x less than 0, y less than 0. What you simply need to do right now is just note down these formulas from the board. I'll just get aside and then I'll tell you once the question comes up. It's very very simple. You don't need to even use these formulas. They were just written in R.D. Sharma और in the state textbook, इसलिए मैंने लिखवा दिया है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती. tan inverse x plus tan inverse y should be equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. यदि tan inverse x minus tan inverse y होगा तो ऊपर लिख देना tan inverse x minus y upon नीचे 1 plus xy, उतना ही काम. Now let's come on to the part of sin inverse का formula. Sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square. यदि प्लस होगा तो अंदर वाले जगह पर प्लस आएगा, यदि यहाँ पर माइनस होता तो अंदर वाले जगह पर फॉर्मूला बनता sin inverse x under root of 1 minus y square minus y under root of 1 minus x square. कोई चेंज नहीं आता. ओके. Let's now move on to the next question. So I've written around 5 questions on the board just to make you look those simple questions. अभी गाइस मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ ये इन सबसे अलग है, बट गाइस ये मेथड एग्जाम में बहुत काम में आता है. क्लास 10th का मेथड है बच्चों वाला, बट अगेन R.D. शर्मा मेथड और स्टेट टेक्स्ट बुक मेथड. उन्होंने बोला है सॉल्व करो ये 5 क्वेश्चंस साइन कॉस इनवर्स 4/5. अब मैं साइन को कॉस से कैसे कट करूं? या तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा या इसको चेंज करना पड़ेगा. इसको तो चेंज कर नहीं सकता तो बेटर है इसी को चेंज करता हूं. कैसे चेंज करूंगा? लेट्स सी अ ट्रायंगल, लेट्स मेक अ डिग्री. ओके. कॉस इनवर्स आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इट इज आल्सो सेड एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. इसका बेस क्या हो जाएगा? ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये. तो एडजेसेंट साइड इज 4 and hypotenuse is 5. Common sense guys, by using Pythagoras theorem I can apply hypotenuse square should be equal to this square plus this square. So 25 minus 16 will be 9, under root of 9 is 3. Pythagoras theorem. Okay.
25 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. ये नहीं दिया हुआ था तो 25 माइनस 16 अंडर रूट करूंगा 9 3 आ गया. अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो. इट शुड बी इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एंड नाउ व्हाट कैन यू राइट. यू कैन सिंपली राइट 4/5 के जगह पर, क्योंकि आपने यहाँ पर चेंज कर दिया है इसको, तो अब आपको चाहिए होगा यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो व्हाट इज ऑपोजिट? इसके ऑपोजिट इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5. सो लेट्स राइट 3 अपॉन 5. You will say, sir, but the question तो cos inverse था. That's what I am saying. I changed it to sin inverse. Simple. So if यदि मैंने sin और sin inverse है and common sense ये 3/5 है, दोनों 1 से छोटे हैं, sin to sin inverse cancel नहीं होता है. It's a formula. So answer will be equals to 3/5. That's so simple. Correct? Let's move on to this one. The next, let's make another diagram. But before that, let's change the marker. Tan inverse base upon hypotenuse, sorry, perpendicular upon base or opposite side upon adjacent side. So यदि ये theta है तो इसके opposite side is 15, adjacent side is 8 और perpendicular upon base. Again applying Pythagoras theorem. 15 का square is 225, 225 plus 8 का square is 64, 225 plus 64 is 289. And square root of 289 is 17. You can use the Pythagoras theorem to find it out. That's simple. Let's change it. Sin. मुझे tan inverse को sin inverse में change करना है. तो क्या करूँगा? Sin inverse perpendicular upon hypotenuse or opposite side upon hypotenuse. So what is opposite side? 15 upon hypotenuse. Correct? Sin inverse again cancels, or not cancel actually the property. So the answer is 15/17. That's so simple. So that means that in trigonometry you can use this trick to solve any kind of question, and guys, believe me, every kind of question can get solved. Okay. Let's now rub first of all and let's make some space on the board. Guys, remember to please note down these formulas. If you can learn these formulas, only 2 of them, केवल इसको और इसको लर्न कर लो एंड cos इनवर्स को लर्न कर लो, चैप्टर ही खत्म हो जाता है. लेट्स मूव अहेड. सो आई एम रबिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट? ओके. You don't need to ideally even learn these formulas because topic is इतना simple है. Of course, for state board students, I'm talking specifically about the Maharashtra state board students. You need to, of course, guys, learn this, but otherwise, I don't think so. You even. Let's start with question number 3. So question number 3 goes something like this. That is sine. Then comes cot inverse 4/3. Correct? So how will you solve this? Very simple. You will leave it like this. Sine. आप इसी को पहले ऐसे लिख सकते हो. Tan inverse 3/4. If you don't want to leave it like that, ऊपर से भी हो जाएगा. Draw a triangle. Make an arc. Tan का फॉर्मूला होता है perpendicular upon adjacent और perpendicular upon base. So perpendicular is this or opposite side is this. Base is this. Common sense according to Pythagorean triplet, 9 plus इसका square 16, 16 plus 9 is 25. Fine, it's a Pythagorean triplet. So what should be the answer? You are going to write it as sine inverse perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular was 3 or opposite side was 3 and hypotenuse is 5. So this will get cancelled and answer is 3/5. That's all. Let's move on to the next one, guys. Question number 4. Cos cosec inverse 13/12. Okay. Now once again take the triangle, make an arc,
कोसेक इसको पहले सीधा कर देते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बिकम कॉस, दिस इज गोइंग टू बिकम साइन इनवर्स, प्रॉपर्टी उल्टा जो आपको उसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, 12/13. दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144, 169 minus 144, it comes out to 25, square root is 5. So let's change it once again. So this is going to become cos, then it's going to become cos inverse. Now why have I brought cos inverse? Easily property है, cancel हो जाता है. So cos inverse यहाँ पर हो जाएगा base upon hypotenuse. So what is base? It's 5 and hypotenuse it's 13. So final answer 5/13. Let's move on to the next one, that is question number 5 and the last. It is cos cot inverse, cos cot inverse 15/8. Okay, so how are you going to solve it? Simple. यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में, let's again make a triangle, make an arc, cot inverse इसको सीधा कर देते हैं, cos, this is going to be tan inverse, this is going to be 8/15, right? So perpendicular upon base or adjacent side, so opposite upon adjacent side, so opposite is 8, adjacent side is 15. 225 plus 64 is 289, so it will, under root of 289 is 17 by Pythagoras theorem. So this is going to become now, that is cos inverse, and it will be adjacent upon the hypotenuse or the base upon the hypotenuse. So base is 15 upon hypotenuse is 17. So final answer will be 15/17. That's all. That's so simple, guys. Let's move on to the next question, which is not being written on the board but generally writing it for you. Say cos sin inverse x. Now remember, cos sin inverse x. So you can write cos, but no, don't write it. Now using one of the property also you can write, that is cos and sin inverse x की जगह पर आप डाल सकते हो pi/2 minus cos inverse x, but let's not do that. इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है हमेशा. Let's again make a triangle. So perpendicular upon hypotenuse or opposite side upon hypotenuse. So opposite side is x, hypotenuse is 1. So what will be the base? It will be under root of 1 minus x square. कैसे? Hypotenuse square minus this square should be equal to this square. So let's write it, that is cos inverse, and क्या लिख दोगे? That is base upon hypotenuse, base is under root of 1 minus x square by hypotenuse is 1. So cancel, so answer will be 1 minus x square. So in this way you can solve any of the question, guys, whatsoever you feel like, and trust me, the answer is going to come absolutely right. So you don't need to learn all those formulas, just remember this triangle method. So what we are going to do tomorrow we are going to take out furthermore questions. Tomorrow we are not going to, I'm just going to write cos inverse, and I think only one formula is left out. So I will just write the cos inverse formula, and then we are going to directly hit onto the questions. So tomorrow let's take a target of solving around 20 questions, and then only we are going to end up the lecture. So that is going to range from the smaller questions to the bigger questions altogether. But hopefully post tomorrow's lecture, I don't think that inverse trigonometry में आपको ये doubt होगा. Okay, thank you guys so much. Chill and relax and keep smiling as always, guys. By the way, the rumors are that from July the schools and the coaching centers hopefully should start. Nobody knows. That's just a rumor. Thank you guys. Bye. Keep smiling.